Hi, welcome to the Legex Show, a podcast that will help you simplify the business ecosystem. Co-hosted by the co-founders of Legex, Ayush and Vishesh. So sit back, relax, and enjoy the podcast. Hey guys, welcome to the brand new episode of the Legex Show. I'm your host Ayush. Today, I will start on a somber note. Global temperature is rising. And it is our rapid human activity changing the structure of society around us. After two industrial revolutions, power of the industrial grid haven't evolved much yet. We urgently require to rapidly shift toward the future with cleaner energy option. Today, my friend Akshay Makar over here follows exactly the same ambitious vision. So, Akshay is an experienced climate entrepreneur and a driven innovator. He's currently working in the renewable energy sector and is Managing Director of Climatenza. He's also a Forbes 30 under 30. He's currently partnering with leaders to help them think differently and is working towards attain the unattainable. So, Akshay, it's really great to have you on board. Thank you so much, Ayush. Happy to be here. The feeling is like us, honestly. So, Akshay, let's just start with a very basic question. What is Climatenza? So basically, as the name suggests, climatenza means, for me, it means that the end of the climate change. Usually, हम innovators के और entrepreneurs के हाथ में होता है कि हम how we can solve this biggest opportunity that we have, right? So when I graduated in 2015, मैं mechanical engineering degree के साथ graduate हुआ IP University from Delhi. So I had an option to pursue this career in clean energy sources. Initially, I targeted solar photovoltaic industry, but soon I realized that everyone is following the same path because the photovoltaics had become new normal by 2015-16. Being a person who is always driven by the innovation, I wanted to use this innovation as a tool. And my study is mechanical engineering as a tool to bring something new to the market. I remember that I was in Morocco in 2016 for a conference. And I was quite fascinated with the solar and was quite promoting over there in the form of the SDG 7, which is promoting of the clean energy sources. So a couple of my friends told me कि आपको वहाँ मोरक्को में एक प्लांट है जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सोलर टेक्नोलॉजी. उस प्लांट का नाम है नूर प्लांट. तो नूर प्लांट क्या करता है? नूर प्लांट एक कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का यूज करके सीएसटी क्या होता है? सीएसटी होता है आप सिंपल एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो, राइट? तो मैग्नीफाइंग ग्लास के अगर नीचे आप पेपर रखो तो उसको थोड़े टाइम बाद जलना शुरू कर देता है. क्यों करता है? क्योंकि उसकी रिफ्लेक्टिविटी जो होती है, जो सनरेज होती हैं, वो एक सिंपल फोकस कर एक पॉइंट पे पड़ती हैं, राइट? इसी प्रिंसिपल का यूज करके कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल इंडस्ट्री चलती है. सो वाज क्वाइट फैसिनेटेड कि एक सिंपल सा कंसेप्ट का इतना अगर वी कैन यूज इट दैट ऑन अ स्केल, सो वी कैन पावर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस. एंड व्हाई इट हैजंट बीन डन इन इंडिया वाज द क्वेश्चन फॉर मी दैट टाइम. स्लोली बट ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी साथ साथ चलते हैं. We started with mid 2016. Initially, I personally started working on this concentrated solar thermal technology. Slowly and gradually built partnerships with academy institutes, including Indian Institute of Technology, Kanpur. Now we are working with 3 IITs. Also, we have been well supported by Government of India, Ministry of New and Renewable Energy, as well as Government of Chile. So was quite a fascinating journey until now, and we are looking forward to promoting this new and clean energy sources. Honestly, Akshay, the way you have told me about the energy sector, it looks compelling. पर मेरे दिमाग में बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि एनर्जी सेक्टर का इंडस्ट्रीज पे क्या इम्प्लीकेशन होगा और इसी सेक्टर का इफ वी आर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बेसिक कॉस्ट क्या है? मतलब क्या कॉस्ट है जो इनकर करनी पड़ेगी, सिंस इनिशियल कॉस्ट भी आएंगी. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट we are looking at an emergent technology which would actually be much more like process redefinition, right? Absolutely. So there are two questions. पहला कि इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट है और दूसरा इकोनॉमिक्स. ठीक है, लेट्स टेक वन बाय वन. तो जब हम इंडस्ट्रीज पे फोकस करते हैं तो आज जब हम एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी, राइट? तो सोलर एनर्जी
हम बोलते एनर्जी है, लेकिन असल में एनर्जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. एनर्जी खाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. एनर्जी का मतलब है इनिशियल, मतलब जो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो इंडस्ट्रीज में हीट की फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे आपका स्टीम हो गया, हॉट वाटर हो गया, राइट. So that is known as a primary thermal energy, while the other energy is the electricity. So in household, we usually uses 90 to 95% of energy as electricity within India, and just 5 to 10% of the energy to heat the water or for any other applications like heater in winters, right? इंडस्ट्री में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है. इंडस्ट्री में आपका जो 75% ऑफ द एनर्जी होती है वो आपका थर्मल एनर्जी की फॉर्म में यूज होता है, और जो आपका 25% एनर्जी होता है वो सिर्फ बिजली की फॉर्म में यूज होता है. लेकिन हम जो प्रमोट कर रहे हैं वो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम सोलर फोटोवोल्टिक्स कर रहे हैं प्रमोट. हम कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल नहीं कर रहे हैं, विच इज व्हाई इंडस्ट्रीज इज अ पोटेंशियल मार्केट एज वेल एज एक ऐसी मार्केट है जिससे अभी तक स्काउट ही नहीं किया गया. So there's a huge potential over there in the not only in the form of establishing new technologies over there in industries, but also in the form of reducing the carbon emission from the industrial sector. अब अगर हम इंडस्ट्रीज में डाइव डीप करते हैं तो इंडस्ट्रीज में बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर्स यूज होते हैं. जो फर्स्ट होता है उसे हम कहते हैं लो टेम्परेचर लो प्रेशर. जो सेकंड होता है वो होता है मीडियम टेम्परेचर, और थर्ड होता है हाई टेम्परेचर. सो लो टेम्परेचर का मतलब है आपका 25 डिग्री से लेकर आपका 150 डिग्री तक, 150 तक. आपका मीडियम का मतलब है 150 से 400 तक, और जो भी 400 से ऊपर होता है वो हाई टेम्परेचर में आता है. अच्छा. तो एट क्लाइमेटेंजा हमारा फोकस आपका लो और मीडियम टेम्परेचर है, जो आपका 50% मार्केट को कैप्चर करता है. मेरा एक बहुत मेजर सवाल आता है, सिंस यू हैव बीन वर्किंग ऑन योर कंपनी with the governments and you are actually tapping the Latin American markets as well, how do you actually manage operations across these? Since of course it would be very robust and diverse sort of operations, right? Yeah, our 90 to 95% of the operations exist in India. Okay. We expanded to Chile in 2018, but for the past 2 years we haven't been our focus has been entirely on the Indian market, majorly because of the two things. We wanted to build some case studies that could happen within the Indian market, because we were getting most of the traction from Indian market. But we also want to strengthen our roots कि हम एक बार यहाँ पर कर लें, and then we will expand out to the Chile in the form of the big plants once we have the different case studies already deployed. We already have a very small team in Chile of 3 people. And we already have getting some good traction in the form of business traction here. There is nothing going on concrete on ground because of the coronavirus. We were planning to start manufacturing our first project in July this year, but unfortunately due to the COVID situation and the lack of confidence of the people कि अभी ये right time है invest करने का नई technology में, because everyone is focused upon how to stabilize their current operations and get out of this COVID situation. So I was saying, Akshay, actually it reminds me of my own startup as well, साथ. So I understand where you are coming from with the COVID hit, but my personal question comes in a very distinct direction, wherein we are talking about renewable energy, which is about to get imperative since we are already in the cycle of 6 Mars extinction, I would say. And then of course the global energy grid need to actually work together in that sense, right? So my question comes in that sense ki, since when it actually changed from an option to an imperative, wherein we talk about this renewable energy sector, right? And how does even big companies support small startups like you in the form of CSRs or anything? Right. Ayush, I won't say that now it is a matter of CSR, right? Corporate social responsibility का time गया. अब हमारे पास we just have a limited time in which we have to we have to come up with the new solution and scale it up at the more scalability in a more scalable manner. And you are very right in one way that the major companies like the bigger brands, the bigger MNCs are coming up with a good initiatives. We call this term net zero. So net zero क्या होता है?
आपका एंटायर वैल्यू चेन में आपका जो एनर्जी रिसोर्सेज है, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, चाहे आपकी प्राइमरी एनर्जी की फॉर्म में हो, आप उसको कैसे फॉसिल फ्यूल बेस्ड बॉयलर से या फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से क्लीन सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हो, राइट? तो यहाँ राइट। पर रिसेंटली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि आपका बीपी एनर्जी हो गया, रिसेंटली शेल का हो गया, आपका H&M का हो गया, तो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत एम्बिशियस टारगेट लेकर आ रही है, एंड दैट इज क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर अस. This feels that we can be one of the strategic stakeholders as well as implementers who can support these companies to bring clean energy sources across their value chain, and we are quite happy with that ambitious targets. बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। अक्षय, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आता है इस चीज में कि एनर्जी ग्रिड का फिर फ्यूचर क्या होता है उस सेंस में? मतलब वुड बी ever able to see its global consolidation or some sort of decentralization जहां पे सारे स्टेक होल्डर साथ में काम कर रहे हैं, और अगर ये फ्यूचर एग्जिस्ट भी करता तो कितनी दूर है, कितना पास है? ओके, सो यहाँ पर अब एनर्जी ग्रिड का आ गया, तो ग्रिड मतलब इलेक्ट्रिसिटी, राइट? हाँ, मतलब इट डिपेंड्स। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग इज प्रीटी लेमैन एज कंपेयर टू इन दैट सेंस कि हो सकता है कि ये ग्रिड शायद ट्रांसफॉर्म भी कर जाए या ऑल्टर भी करता है। मतलब क्या उसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली नाउ द थिंग इज, जब हम ग्रिड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्मार्ट ग्रिड की, हम बात करते हैं 21st सेंचुरी ग्रिड की, जो गवर्न करेगी आपके न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से, स्पेशली डिजिटलाइजेशन से, राइट? तो हम जब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम तीन इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। हम बात करते हैं डीकार्बनाइजेशन की, हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की, और हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। द ग्रिड ऑफ द पास्ट एंड द ग्रिड ऑफ द फ्यूचर इज एंटायरली डिफरेंट। तो छोटा सा एग्जांपल, हम जब अगर 1990s की बात करें तो हम बात करते थे कि मैसिव कोल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, गैस पावर प्लांट्स दैट आर सिचुएटेड एट ह्यूज डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सिटीज, एंड ट्रांसमिशन लाइन से हमारे सिटीज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती थी, राइट? लेकिन आज हम वही देख रहे हैं कि मतलब डिसेंट्रलाइज छोटे छोटे आपके रिन्यूएबल प्लांट, चाहे आपका रूफटॉप हो गया, चाहे आपका यूटिलिटी स्केल प्लांट्स हो गए रिन्यूएबल, चाहे सोलर हुआ, चाहे विंड हुआ, अब आने वाले टाइम में आपका बायोमास, आपका सीएसपी, आपका स्मॉल स्केल हाइड्रो पावर प्लांट्स, ये सारे एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। That would be like a very great change and a breakthrough for the product-based startup as well, since much of their costs can be actually reduced down to very small quantity, right? बेसिकली व्हाट देखो, कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो सोलर फोटोवोल्टिक्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई है ओवर द ईयर्स, और उसका एक मेजर रीजन है मास मैन्युफैक्चरिंग। तो जब आप किसी भी चीज का मास मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट कम होगी, और इट इज ग्रेट, बट देयर इज अगेन अ चैलेंज कि आपका, अगर हम रिन्यूएबल्स की बात करें, सोलर की या विंड की, इसकी जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, इंटरमिटेंट प्रॉपर्टी होती है, वो इंटरमिटेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? इट वर्क्स ऑन स्पेसिफिक आवर्स ऑफ द डे या फिर स्पेसिफिक सीजन ऑफ द ईयर, राइट? एंड उसका काफी ज्यादा प्रेशर आता है आपके ग्रिड पर, बिकॉज जो हमारी टर्मिनोलॉजीज अभी तक एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो आपकी बेस लोड की हो, चाहे पीक लोड की हो, वो एग्जिस्ट करती हैं आपका डिस्पैचेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में। डिस्पैचेबल का मतलब है 24 घंटे अवेलेबल एनर्जी, क्योंकि आप कभी भी कोल जला सकते हो, आप कभी भी गैस फायर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। यही प्रॉब्लम होती है कि आपका सोलर अगर खाली सोलर की तरह एग्जिस्ट करता है, उसमें अगर स्टोरेज इंटीग्रेट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ग्रिड की रिलायबिलिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी स्टेबिलिटी पर। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए जब हम बात करते हैं कि हाउ द ग्रिड विल चेंज, the grid will change with the integration of hardware solutions and the software solution. हार्डवेयर में आपके, अगर हम सोलर और विंड की बात करते हैं, तो उसके साथ हमें स्टोरेज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि अगर हम 6 to 6 सोलर से ले रहे हैं तो उसके बाद कंटिन्यूस डिस्पैचेबिलिटी के लिए स्टोरेज हो, और उस स्टोरेज को ऑपरेट करने के लिए डिजिटल टूल्स, फॉर एग्जांपल अ वेरी new technology that is coming to the market, and the one we are also working on is known as a digital twin. So digital twin क्या होता है? आपका entire replica, a virtual replica of the real assets. तो उसको मैनेज करना काफी आसान हो जाता है with the different technologies like the artificial intelligence and the machine learning. तो उसमें
बिग डाटा एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करके कि आपका प्रिडिक्शन करना. The total upgradation of the energy logistics through 100%. automated tools somehow, which is very great. Matlab, 100%. it looks like pretty 100%. great application. Since everybody talks about their success, we want to understand a point wherein you actually faced a failure and then you actually combated against it, or even if there's a particular failure exists, जिस चीज को तुम combat करने की कोशिश कर रहे हो या difficult problem है. नहीं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को मैं थोड़ा अपडेट करूंगा. फेलियर बिल्कुल. कभी नहीं होता आपके लाइफ में, हमेशा लर्निंग्स होती है. ठीक है, तो हाँ. आप ये कह सकते हो सक्सेस या लर्निंग्स. अब लर्निंग्स हर दिन में होती हैं. मैं हर दिन में, बिकॉज एवरी एंटरप्रेन्योर देयर इज अ लर्निंग बिहाइंड हिज अपसाइड कर्व. सो मेरे कर्व में भी काफी सारी अपसाइड लर्निंग्स हुए, अपसाइड डाउनसाइड फॉल्स हुए हैं, बट दैट एक्ट्स एज अ लर्निंग एक्सेलरेटर फॉर मी. इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं 2016-17 में, तो जब आप एक हार्डवेयर स्टार्ट करते हो तो आपका इनिशियल फाइनेंसिंग व्हेन यू कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली इज ऑलवेज अ बिग इशू. So बिल्कुल I agree. to develop those new technologies, and especially when you're not from the IIT or the IIM, again, you don't have those resources, you don't have those research laboratories, so you lack those resources. So in that moment, using all those motivations to build a team, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास टीम होती है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं. अगर आपके पास आपको बैकअप करने के लिए टीम है तो आप किसी भी मुश्किल से आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर आप अकेले हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट. सो यहाँ पर हाँ, फॉर्चुनेट इनफ कि आई हैड अ ग्रेट टीम. With that great team, we got on to work with some great partners all over the world, from India to Chile to Europe. We had a great partners, and financing was an issue, but we are quite happy that we were well supported by the government institutes as well as the private institutes. Actually, Akshay, it reminds me of my own journey as well, since it's been 2 years. And even during our initial years, and I would say it's like we are almost about to end up our 2 years now. We also like completely bootstrapped, and I understand where you're coming from into this. So there were particular instances even where we had to think about very quick-witted solutions to certain sort of situations, and we had to makeshift our way throughout the things. And even during the COVID, I would say it actually supported us in certain manner. Like we had an opportunity to build a very like large-scale team to manage different operations in a pretty robust manner as well, and that actually gives us a very very great feel. That's when I understood that it's pretty important to have a team rather than just people, a bunch of people coming together with skills, because until and unless your team won't be like 100%. motivated to, you cannot do a lot of things, right? So Akshay, I was saying कि basically यही सबसे important चीज है कि अगर आपके पास initial founding team में शायद आपके पास 2 member है, you and your co-founder, the commitment that the person is bringing is way ahead than any other thing. That's most important thing. I definitely agree to that point. So Akshay, एक बहुत important question आता है. तो let's say एक young entrepreneur है, and that person wants to start a he wants to venture out into the renewable energy sector. So how must a person must actually approach this, particularly in the case of India? The photovoltaic business. Jokes apart, basically, there is a huge market that has already been occupied for the photovoltaic. So अगर हम बात करते हैं, I'm talking for the people who are thinking to enter the photovoltaic market, just to give them the idea कि हमारे जो targets है वो 100 गीगावाट 2022 तक का टारगेट है सोलर का, जिसमें 60 गीगावाट आपका यूटिलिटी स्केल है और 40 गीगावाट आपका रूफटॉप है. तो उसको ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर है. व्हाट आई बिलीव इज द इनोवेशन एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया इज लैकिंग. और मैन्युफैक्चरिंग हम रेगुलर सुन रहे हैं कि मेड इन इंडिया कंसेप्ट हमें लाना है और यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, राइट. सो व्हाई नॉट टू यूज दोज इनोवेटिव स्किल्स एंड दोज new advancement in the material as well as new advancement in the design of the new technology. Either it comes in the concentrated solar thermal, either it comes in the biomass. So there is a huge problems currently that is different from photovoltaics, but still exists. For example, farmers usually throw out their waste, right? So creating something that could generate electricity from the waste is a good field to enter these days.
something related to hydrogen is a great field to enter these days. Small scale nuclear plants that could be stabilized and can generate dispatchable energy is a good field. Then storage, battery, thermal storage, hundreds of different fields exist, and you have a great opportunity. We are in that time of a period of our lives or of a century where this energy sector is changing, and this is once in a lifetime opportunity. There is a huge market over there, and the innovations are required. So I would say to all the best to all the young entrepreneurs who are thinking to enter this renewable energy industry, just go out and use the innovation as a tool. India needs you. I even personally believe when we talk about the sector in itself, even I am a great proponent of innovation. Even my founders would say so. And I totally believe that we are like in the 8th innings of our century and our total existence of humanity, wherein we need to take certain urgent steps to handle these things. So एक और question जो मेरे दिमाग में यहाँ पे आता है कि when we talk about young startups, right? And what do you think a role of a incubator and an accelerator plays when they actually jump out into these industries? I'm talking from a product side of us, product-based startup basically. Accelerators are a great way. So we have been well supported by Startup Chile, which is a South American, one of the best accelerators in the world. They are ranked as a 10th best startup accelerator in the first in the Latin America. So I truly believe that accelerators are a great way, but they are the great way only when you are at a point to launch the product, or especially have a minimum viable product, which is a prototype as a product that could be implemented with the industrial partner as a proof of concept for that technology. So how you can implement that technology, it can come from the accelerators partner. So the accelerators have a huge partners, and the huge industries come together to bring their innovation in their industry. So in that way, once you have a big prototype, you have the testing of those prototype being done with some research partners. That would be a great value for you if you become the part of the accelerator. But I would suggest first do the prototype yourself. Either rent a small laboratory, use the skills of the mentors. There is a huge mentor base, and there are people in the academy who are just waiting for you to come there because they are also looking forward to some research. So hundreds of academian people who want to transit from the academia to the industry, or those people who are ready to support you in public, private, or academia, just go out there, just build your small MVP. Start with the CAD softwares to build your small products. Do some basic iterations. और वहां से start करके आपका जैसी प्रोटोटाइप होता है, आपके पास 100 of options खुल जाते हैं. एक चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरे मेंटोर ने बोला था, हमारे पास hundreds of thousand dollars पड़े हैं. Financing is huge out there. Billions of dollars is out there in the market. We require the innovation. हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो हम स्केल कर सकें, जो हम इजीली मॉड्यूलर हो, जो इजीली इम्प्लीमेंटेबल हो, और फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा है मार्केट में. तो आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना है और एफिशिएंट प्रोजेक्ट लाना है ताकि वो हम इम्प्लीमेंट कर सकें. सो जस्ट गो विद द बेसिक्स एंड इम्प्लीमेंट दैट एट स्केल. ये बिल्कुल, it looks like for the first time it's sort of a revolution through innovation, I would say. But for the first time I am looking at plethora of people coming from different sort of understandings towards the sector, towards how we must actually proceed as human beings or proceed as an industry, and being very sentient about our choices as well, so that we can actually conserve our future. Absolutely. For the future society as well. So Akshay, it was amazing talking to you. So any parting advice that you want to give to basic startups? Any 3 kind words that you believe I would that must say be passed just do on? it. I mean, there is no one stopping you. Just just do it. I mean, we need the innovations again. Ayush, we need the innovations. We need to build in India. We need to create this country a manufacturing hub. So all the product enthusiasts over there, all the renewable energy enthusiasts, just go for it. The market is waiting for you. Great, Akshay. So guys, it was Akshay Makar with us. Please subscribe for more updates and stay tuned for more episodes. And please be conscious about your choices that you make on Earth, and shift towards renewable energy sources and renewable choices
so that we can actually be awake for a better tomorrow for our future generations. Hope to see you soon, all guys. Bye.